Today we're going to study segment trees, right? It's a different data structure altogether. Alright? We'll see where and how it is used. See. So, what is it saying? That it's a data structure that stores information about array intervals. It's a data structure, right? What does it store? Information about array intervals. Intervals मतलब कि मैं आपको कुछ तो रेंज दे दूंगा कि लेफ्ट में यहाँ पे और राइट में यहाँ पे, और इस इंटरवल के बारे में आई विल आस्क यू समथिंग. Are you getting this? Information about array intervals. I'll give you, let's say, L and R. तो array में L index and R index के बीच में I can ask you about some information, right? Majorly, they can ask you about sum of those consecutive numbers from L to R, right? Or minimum number, maximum number in that range from L to R. So that is what segment tree is used for. Data structure that stores information about array intervals, right? As a tree, we implement segment. नाम में ही tree है. It's a segment tree. एक particular segment, right? It's a tree. Okay. And this I told you the two applications are finding sum of consecutive elements इस रेंज में. This is what I was telling you. Array की normal range क्या होगी? Total 0 से n-1 and उसमें L और R होगा, and obviously R should be less than n-1, less than or equal to n-1, and L should be greater than or equal to 0. It can be equal to 0. Very clear? Yes, sir. Right? Similarly, you could also use for finding the minimum element in the given range. मतलब L से R के बीच में what's the minimum element? You can also use it for this. तो पहला thought, the first thought which should come to your mind should be what? Sum है. So ऐसे questions तो we have done before, right, on LeetCode or other platforms. What do we use? Prefix sum. कौन बोला? Superb. We use something called as prefix sum. You know how prefix sum is made, right? मतलब prefix array अगर आपने बनाया है P, तो P of I क्या हो जाएगा? वो इंडेक्स तक का sum. And अगर आपको, let's say I created a prefix sum for array 0 to n-1, and now I ask you, give me the sum of L to R. So what will you do? P of R minus P of L minus 1. Is it L or is it L minus 1? L minus 1. When I say I need sum from L to R, so L is included in it. तो आप वो नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे ना उसके पहले तक का, क्योंकि L minus 1 what does it store? Sum from 0 to L minus 1, and 0 to R what does it store? Sum from 0 to R. So sum from 0 to R this much, and I subtracted 0 to L minus 1. क्या बचा? L to R. Is this thing very clear? Yes. Right. अच्छा, but now see why is it so great? Why segment trees are so great? What's the time complexity of this? O of n. Finding the sum is O of 1. It's about creating prefix array कितना time लेगा? O of n. And the biggest disadvantage of prefix array is, what if I update the given array? Let's say मैंने A of P जो था उसको x कर दिया, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट? उसके पहले तक तो सब ठीक रहेगा, उसके आगे का सब कुछ चेंज हो जाएगा. तो प्रीफिक्स सम में अपडेट करने के बाद, मतलब if I update A of P equal to x, right, it will again take O of n time to update the entire prefix array. Is this thing clear? Yes. Right? Segment tree does all this in O of log n. Can you imagine? O of n से सीधा O of log n में आ गया. Right? That is the reason segment tree is important, right? See, it allows modification of array elements,
and it's a very flexible data structure. We'll see how it looks like. When you see how it looks, it will be much clearer, right? So it allows modification of an element and very flexible data structure. And also one important thing is it only requires linear amount of memory. This is the maximum it could go, 4 into n. Maximum, इससे कम ही रहेगा. तो space complexity क्या हो जाएगी? O of n. Are you getting this? Right? So अब तक क्या क्या समझा? Segment tree is a data structure in a tree form, and you store information about array intervals, right? Now let's. Alright. So now let us see a question directly on segment tree. Right? We have been given an array of size n, so indexes would be from 0 to n minus 1. And I am asking you to compute the sum of a of I from I equal to r to l. This is nothing but sum of l से लेकर r. This is what I am asking you, right? And l and r could be anything. All right, clear? Right? And the second thing is your code should also handle changing values of the element in an array. This is where it gets tricky. मतलब आपने बना लिया segment tree, right? You have created it. You have stored intervals का sum. We'll see now. And उसके बाद I can update the array. तो if you update just one element, काफी चीजें change हो जाएगी, right? काफी intervals में नए नए सम आ जाएंगे, right? So that is the reason segment tree does that. So see, this is what I was telling you, and you have to do both of this in. Okay. Guys, do you understand the difference between O of n and O of log n? 6. What is 2 to the power 16? Quickly. 2 to the power 10 क्या है? 11, 12, फिर उसके बाद 13, नहीं 8 में कुछ आएगा, देखो चेक करके. 2 to the power 13 कितना आएगा? 4096 into 2, सॉरी 819. हाँ 8192, और उसके बाद क्या आता है? 165536, right? 2 to the power 14. What is 2 to the power 14? 16384, and 2 to the power 15. 32 768. अच्छा एक और करते हैं. 2 to the power 16. This would be 65536. This is what I was telling about. So let's say 2 to the power 16 is 65536. Now just imagine, everyone, just imagine कि your code runs in O of n, right? And n is 65536. And let us assume every operation takes 1 second, right? तो कितने ऑपरेशन हो जाएंगे? 65536 operations, right? And I am just assuming that let's say every operation takes 1 second. So total seconds कितने लग गए? 65536. If I try to convert this into hours, 65536 seconds हुआ ना? तो divided by 60 minutes मिलेगा, again divided by 60 hours मिलेगा. 3600 कर दो. करो. Divide by 60, divide by 60, और जो रिमाइंडर बचेगा वो अलग से ऐड करते जाना. 18.2. Give me exact. How many hours and how many minutes and how many seconds? 1092. बराबर. 1092 मिनट्स आया, और कितना सेकंड्स बच जा रहा है अलग से? 2066 something
18 घंटे 12 मिनट 16 सेकंड 12 मिनट कैसे? तेरे को कितना मिनट आ रहा है? 1092 मिनट्स ना, मल्टीप्लाई 1092 by 60. 1092 by 60 डिवाइड बाय 60 करेंगे 18.20 1092 into 60 कितना होता है? into 60 हां 17,000 हां ऐसा कैसे हो रहा है? 1092 into 60 इंटू क्यों कर रहे हो सर 655 655 वो तो वही बनता है। हाँ नहीं 65536 एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ मतलब देयर आर नो रिमाइंडर सेकंड्स एंड 1092 मिनट्स हो गया। इसको 60 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 18.2 हाँ 18 समथिंग ना, तो 18 into 60 कितना है? 18 into 60 720 1080 18 into 60 1080 1092 मिनट्स आया था माइनस 1080 करो, कितना बचा? 18 घंटे 12 12 मिनट 12 मिनट और 18 घंटे 18 hours 12 मिनट 12 minutes, right? This is how this should be more quicker, right? Divide by 60 exactly divide हो रहा है तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो यू चेक कितना रिमाइंडर बच रहा है और उतने मिनट्स और फिर आज में चले जाओ। सो सी एवरीवन 2 to the power 16 is 65536. I have an algorithm which takes O of n time, right? And so if I pass it 2 to the power 16, so it will take 65536 operations and let's say 65536 second, which translates to 18 hours 12 minutes, right? And if the algorithm is log n, so this will be done in 16 seconds. This is what the difference is. We are not able to perceive the difference between O of n and log n. मतलब अगर प्रीफिक्स सम से करोगे ये क्वेश्चन, राइट, और 2 to the power 16 एडिसाइजर, then it will take worst case 18 hours 12 minutes. Segmentary will take 16 seconds. This is the difference, right? चलो come back. So log n and this we have already discussed. Prefix sum जो है कंप्यूट तो O of 1 में कर लेता है, राइट? L2R चाहिए तो आपने P of L minus P of R minus P of L minus 1 किया, राइट? तो O of 1 में it happens, but update will take O of n because an array index is getting updated, तो पूरा का पूरा prefix sum array will also get updated. Very clear? Yes. Now you just see how segmentary looks like. Okay, it's a tree, right? And for simplicity, right, we won't use left child, right child pointer or something, right? We'll use array. Do you know how you store in heaps? Array में स्टोर करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी I store it in an array with root at 1. Just for convenience मैंने root 1 पे लिया, right? तो root अगर 1 पे है and if I have a parent at ith index, left child would be 2 into I, right? Right child would be 2 into I 2 into I plus 1 plus 1 right? मैंने माइनस लिखा नहीं प्लस, हाँ. Left child would be 2 into I plus 1 and उसका parent would be I by 2. Very clear, right? See, this is how segmentary looks like. If I have array A 1 3 minus 2 8 minus 7, root पे I store the entire sum. A of 0 से लेकर 4 तक I store the entire sum. What's the entire sum? 1 plus 3 4 minus 2 2 10 10 minus 7 3. So I have stored sum equal to 3. This is at index 1 because we have assumed it, right? And इसके आगे we know it will always be left child 2i, right child 2i plus 1, right? So now see, and what I do is every time the array gets split in half. That is why segmenting is so beautiful. कि ऊपर वाला root is 0 to n minus 1, फिर ये half में split हो जाएगा 0 से n by 2. This would be n by 2 plus 1 से n minus 1, and then again half until and unless single elements तक पहुंच जाओगे ना लास्ट में, every time if you divide into half, right? So see 0 to 4 था, left child is 0 to 2 मतलब ये
1 plus 3 is 4, 4 minus 2 is 2. Right side would be 2 into I plus 1. Right? 1 I was 1. Always, are you getting it? I is 1, so 2 into I कितना होगा 2 plus 1 3. मतलब ये कहाँ स्टोर हो रहा है? Third index पे. This is stored at first index, second index, third index, then fourth, fifth, then sixth, seventh, and then eighth, ninth. Right? And see, 0 to 4 का 0 to 2, फिर वहाँ पे क्या चले जाएगा? 3 to 4. Yes or no? Yes, sir. 3 to 4 का सम क्या है? 8 minus 7? Just 1. Right? Now just 0 to 2 है तो 0 to 1 में break होगा और 2 to 2 में break होगा. अब 2 to 2 में break हो गया, इसको वापस you can't half, right? Obviously we have reached the leaf node. What is this called as? Leaf. Leaf node. Leaf node doesn't have left child and right child. So 2 to 2 मतलब single element. 0, 1, 2. That's the reason sum is minus 2. 0 to 2 था, it got separated into 0 to 1 and 2 to 2. 0 to 1 में get separated into 0 to 0, 1 to 1. 0 to 0 का मतलब क्या होगा? First element. So sum is 1. 1 to 1 का मतलब क्या हुआ? Second element, which is sum is 3. And similarly there also. Is this thing clear? Visually how segment tree looks like? Can you code? Code कैसे करोगे? Just think about it. सबसे पहले तो segment tree क्या करना पड़ेगा? Perfect. Build का कोड लिखो. मतलब सोचो कि क्या क्या होगा. सबसे पहले सी whenever you think about a function, first thing that should come in your mind is the return type. Right? अभी इसमें return type नहीं होगा क्योंकि अपन array में ही update कर लेंगे. Right? And second thing that should come to your mind is parameters and then the algorithm. Right? We'll see the algorithm sometime, but can someone tell me how we know that this takes linear memory? How do we know कि segment tree will take linear memory? See, let us try to calculate this. First level में कितने चाहिए? First level में कितने nodes हैं? ये node एक ही है ना? Second level पे दो, third level पे चार, right? So what I'm trying to say is the first level पे one node, second level पे two, third level पे four. This will go on कब तक? जब तक बेस केस नहीं हो जाता, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं आ जाते, राइट? सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स जब आएंगे तब उस लेवल में कितने नोड्स होंगे? n. Why? क्योंकि उतने ही तो एरे में भी है n. So since this is in power, can I write last में 2 to the power log n? 2 to the power log n, base 2 is nothing but n. Yes or no? Everyone is clear? Now total number of nodes कितना हो जाएगा? Addition of this 1 plus 2 plus 4 plus 2 to the power log n. Right? This will always be less than 2 to the power log n plus 1. What is the summation of powers of 2? Plus 1 हो जाता है ना? देखो 1 2 1 plus 2 3 4 से 1 कम है. 1 plus 2 plus 4 7 8 से 1 कम है, राइट? 7 के बाद क्या? 1 plus 2 plus 4 is 15. 7 के बाद if you add 68, sorry हाँ 8 plus 7 15. 16 से 1 कम है, राइट? And 15 में if you add 16 31 होगा, 32 से 1 कम. Next 63, next 127, right? तो summation is 2 to the power n plus 1 minus 1. 2 power में n plus 1 minus 1. Is this thing clear? Yes or no? So that's the reason I am saying that this is obviously less than this, right? That's the reason I am saying this will always be less than 4 into 1, right? So segment tree का
even if it is a tree, we are storing it in a guys. We are storing it in an array. तो उसकी size maximum कितनी होगी? 4 into n. Right. Now just think about how would you write build code. Just think. Take 2 minutes. I am also thinking about it. What would be the parameters? What would be the return type? Let's say return type तो void ही होगा, right? Parameters क्या क्या लगेंगे? We are writing the code for building the segment tree, right? Parameters क्या क्या होंगे? Let's say return type is void, function name, build. Think about the parameters. Start एक and array go. होगा array का size तो वही है ना dependent पहले तो array तो लगेगा array तो लगेगा int a, right? एक left और एक और right लेफ्ट और राइट के इंटीजर्स लगेंगे और see so how segment tree is created na, it is recursive in nature. ठीक है, तो recursive in nature के लिए I also need int v, which node I am currently on, which node I am currently on. अगर वो v पे है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा? 2 into I, 2 into v, right child 2 into v plus 1, right? And then obviously left and right. Let's say TL and DR. Now think, if it's a recursive code, सबसे पहले क्या लिखोगे? Base condition क्या होना चाहिए? Base condition बहुत easy है. If yes, if TL is equal to TR, this means you have reached a leaf node. You have reached a leaf node. Then what would you write? If TL is equal to TR, then Return. A of V is equal to what? A of V नहीं segment भी बना है तो उसका bth index पे what will you show? TL equal to TR मतलब ऐसा कंडीशन आ गया है कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर एक ही है. तो if you see here, this is what TL equal to TR looks like. A of 2 से 2. तो इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ वो सेकंड इंडेक्स पे index return करते हैं index पे वैल्यू चाहिए How would you do this? return A of TL आ Let's say जाएगा. I have segment created a segment tree with T. So T of V equal to A of TL. A of TL, right? TL से TR हाँ TL कुछ भी है because TL is equal to TR. Guys, I know stuff. Just bear with me. This is done. Yes, sir. Base condition is done. Recursive. Recursive. Recursive मतलब again you will call build, right? How will you call build? सिर्फ पैरामीटर्स change. Left. The first thing you will have to do is split करना है ना अभी आपको. TL is not, bear with me, right? थोड़ा टफ हो रहा है. नहीं ना, अब तक तो everything is clear, right? हो जाएगा और 3 लाइन में कोड खत्म है, right? तो TL equal to TR done. अभी अगर कोड आगे जा रहा है, what does it mean that TL is not equal to TR? So what are we doing? Splitting. So let's split now. Else int TM equal to TL plus TR by 2. Done. Now think of recursive. It's very easy if you think. Left side, right side, I've already told you. You will call build on what now? Build. A array तो सेम ही रहेगा, बट अभी आपको लेफ्ट में जाना है, तो V का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 2 into V. 2 into V, and this would be what? L, TL, left, right would be TM. Done.
फिर अभी राइट साइड पे भी also you have to call this Same array. same array A 2 into B B plus 2 into B plus 1, right? And start कहाँ से हो रहा है? TM plus 1 से TR. Now what will you do after you have both the answer? करंट नोड में डालेंगे डाटा. करंट नोड में वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे? T of B is equal to what? T of 2v into 2v plus 1. 2v और 2v plus 1 में जो डाटा स्टोर है 2V और 2v plus 1 में उनका सम. परफेक्ट. दोनों चिल्ड्रन का सम ही तो ऊपर जा रहा है. यस और नो? इफ यू नोटिस दिस, क्या हो रहा है? दोनों चिल्ड्रन का सम ही ऊपर जा रहा है ना हर जगह. बड़ी चीज हमारी ऑप्टिमाइज कर रही है. हाँ, तो नाउ see that is what recursion is. You recursively call the function. Now you have the answer. You will use the answer, right? You will use the answer to fill T of B. So T of B is equal to T is what? Your segment T which you are creating. So T of B is equal to what? T of T of 2 into B 2 into B plus 2 into B plus T of 2 into B plus 1. Yes. Done. वेरी क्लियर. बिल्ड एक बार कोड देख लो, इसके बाद जस्ट 2 more functions we have to do. अपडेट एंड सम. सम करते पहले फिर अपडेट. ओके. इफ यू ये समझ में आया तो सम का खुद से ट्राई करो ना. सम इज आल्सो रिकर्सिव ओनली. दिस इज अबाउट बिल्डिंग अ ट्री. सम में यू नो द वैल्यूज ऑफ ऑल p, v, t, 2v, t, 2 into v plus 1. Guys, is this understood? Very clear, right? Let's do the next two as well. ठीक है? तो build हो गया. Now let us write the code for sum, right? Sum मतलब the user has asked you L, has given you L and R and asked you the sum between L and R, right? So what would this function return, by the way? It would return int, right? Yeah. So int sum parameters का क्या होगा? Okay, array और write this code. Assume कर लो कि the segment tree array is a global array, so you don't need to pass it in the function. It's globally available. You will be at a vertex v. एक पॉइंट पे होंगे ना रिकर्जन में, किसी को पॉइंट पे होंगे v. लेफ्ट और राइट होगा डिसाइड किया और यूजर ने दिया हुआ l, r. वहां तक हाँ, L l और r यूजर ने दिया ना. l और r के बीच में निकालना है. tn and tr इज करंट रिकर्जन में आप कहां पे हो, राइट? एंड v इज दैट वन. इसका एक बेस कंडीशन ऐसे आ सकता है कि डिवाइड करते करते अगर l r से बड़ा हो जाए, रिकर्जन विल राइट द बेस कंडीशन फर्स्ट, राइट? अगर l r से बड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? रिटर्न 0. अब सब नहीं होगा. हाँ, उसके बाद
अगर आप एग्जैक्टली यू हैव रीच्ड दैट पोजीशन, मतलब TL is equal to L and TR is equal to R, so you will return what? T of V. Understood? You are at a vertex, right? User has asked you L से R तक का sum. You are at a vertex V and TL is equal to L and TR is equal to R. So what you will return? T of V. T of V. Understood? So that is what I am writing. If TL is equal to L and TR is equal to R, I will return T of V. Now take 2 minutes and write the recursive. It's again 3 lines max. 2-3 lines. वापस डिवाइड करोगे पहले तो मिडल TM TR plus TR by 2. उसके आगे सेम फंक्शन कॉल करोगे. The point is, the question is, on what parameters will you call? Take 2 minutes. TM is equal to TL plus TR by 2. Now think recursively क्या करोगे? Now since this is done, you will return. Now look at me. If this is done, you will return what? Sum of left plus sum of right. ठीक है? Return sum of left में क्या आएगा? What are the parameters? B, right? B का left child क्या है? 2B. 2B. What is TL currently? It is TL only. Yes or no? Yes, sir. And TR is TM and L plus 1 नहीं हो जाएगा? नहीं L+1 नहीं होगा ना, वो तो क्योंकि यूजर व्हेन यू आर सेइंग L तो L इज इंक्लूडेड. L+1 नहीं होगा. तू जो सोच रहा है देखो क्या होगा. See this first 4 parameters are clear. 2 into V, TL, TM, L, right, left. Right के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? Minimum of TM and R. TM of R. क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, आपको L to R तक का चाहिए, right? And now this is divided from L से लेकर TM and TM plus 1 से लेकर R. तो लेफ्ट चाइल्ड का जो लास्ट एलिमेंट है, जहां तक वो सम स्टोर करके रख रहा है, वो क्या होगा? सी दिस मिनिमम ऑफ TM comma R. I know it's heavy. Just try to understand this. Everyone, don't give up now. Try to understand this. See, L से R तक का सम है, right? तो L से लेकर TM plus 1 से लेकर R. तो अभी R जो है वो TM से पहले भी आ सकता है ना, मतलब इधर ही कहीं आपको सम मिल जाएगा TM से पहले, और R जो है वो TM के बाद भी आ सकता है यहाँ पे. Yes or no? Let's say this is TL, TR. तो मैंने इसको ब्रेक किया TL से लेकर TM plus 1 से लेकर TR. Yes or no? मिनिमम कैसे काम करता है? हाँ, क्योंकि अगर R TM से बड़ा हो तो इसका मतलब आपका जो सम है वो ये प्लस इसका कुछ पार्ट ऐड करके आएगा. Yes or no? Yes, sir. Guys,
See, if this is let's say 0 से 16, so this would be 0 से 8, 9 से 16. I can ask you sum from 1 to 7. अगर 1 to 7 पूछा तो आपका सम लेफ्ट साइड में कहीं लाई करेगा, राइट? और 1 to 9 पूछा तो थोड़ा सा लेफ्ट में भी और थोड़ा सा राइट में भी लेना है, राइट? दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग मिनिमम, क्योंकि अगर तू मिनिमम नहीं लेगा और आर यहाँ पे लेगा तो आर तो राइट साइड में हो गया ना, लेफ्ट साइड में उसका सम है ही नहीं. आर यू गेटिंग दिस? आई नो इट्स टफ. I know it's tough. Are you मतलब just visualize it कि मैंने user has asked you to find sum from L to R. You are at a node TL to TR. इसीलिए now you break the node into two parts. Left side is TL से TM, right side is TM plus 1 से TR. अभी L और R कहीं भी lie कर सकता है. ऐसा हो सकता है कि L और R दोनों लेफ्ट साइड में ही है. दोनों लेफ्ट साइड में कब होंगे? जब R TM से छोटा हो. और ऐसा भी हो सकता है कि आधा लेफ्ट और आधा राइट में, मतलब L यहाँ पे ही है और R TM से बड़ा है, तो आपको ये नोड का भी थोड़ा सा सम और ये नोड भी आगे डिवाइड होके कभी ना कभी R एग्जैक्ट मैच करेगा, फिर वो रिटर्न करेगा वैल्यू. कभी ना कभी तो R एग्जैक्ट मैच करेगा ना, तो R एग्जैक्ट मैच करेगा तो यही से आप रिटर्न कर दोगे ना, TL इक्वल टू L, TR इक्वल टू R. तो इसीलिए ताकि थोड़ा सा सम, ताकि हाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना, तो L हाँ इधर ही, देखो राइट साइड में जा ही नहीं सकता, वापस हम है ही नहीं उसका. अंडरस्टूड? दूसरा वाला खुद से बताओ. रिटर्न सम ऑफ दिस प्लस सम ऑफ वर्टेक्स का होगी राइट साइड प्लस 2 into b plus 1. नाउ टेल मी ऑल द अदर फोर पैरामीटर्स. थिंक पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन्स. TM plus 1. TM plus 1 TM plus 1 plus TR TM plus 1 से TR क्लियर, सुपर. TM plus 1 से लेकर TR आगे के तो बताओ. मैक्सिमम ऑफ राइट. हाँ अभी राइट भी कहीं पे भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, राइट लेफ्ट में भी हो सकता है. हाँ लेफ्ट वाले भी हो सकता है. मिनिमम ऑफ TL TM plus 1 राइट कहीं पे हो सकता है. L plus TM plus 1 मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ L at TNM plus 1. मैक्सिमम वाई मैक्सिमम. राइट वाली वैल्यू प्रेफर करेंगे ना. बड़ा एलिमेंट होगा ना सर, तो ये वाले रिकर्जन में उसका कुछ पार्ट छोटा एलिमेंट इधर होगा और एंड पॉइंट में देखेंगे तो वो बड़ा एलिमेंट सब कर देंगे. वाई मैक्स. सर ओवरलैप कर देगा ना अगर मिनिमम यूज करेंगे तो. So you are telling me, see 2 into b plus 1 fine, right side TM plus 1 से start हो रहा है, TR पे खत्म हो रहा है, right? What is L here? मैक्स ऑफ TM plus 1 और सर उस डायग्राम से विजुअलाइज हो रहा है ना. Max of TM plus 1 L. exactly. Are you getting it? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि L यही आ जाए. आपने डिवाइड तो कर लिया, 0 to 16 था, 0 to 8 गाइस, 0 to 16 था, राइट? 0 से लेकर 16, यू डिवाइडेड इट इनटू 0 to 8, 9 to 16. यूजर का कुछ भी हो सकता है. सी 0 to 8, 9 to 16, यूजर बोल सकता है 5 से 15 दे, तो दोनों में आंसर है. यूजर बोल सकता है 2 से 7 दे, तो सिर्फ लेफ्ट साइड में आंसर है. यूजर बोल सकता है 10 से 12 दे, तो सिर्फ राइट साइड में आंसर है. इसीलिए मिनिमम मैक्सिमम लेना पड़ेगा. और पैरामीटर कॉमा R. हाँ कॉमा आर. सो दिस इज लेफ्ट एंड राइट इज आर. यू रिटर्न दिस एंड यू गेट द सम. इतनी मेहनत करनी पड़ती है O of n से log n लाने के लिए, राइट? सो वी आर डन विद बिल्ड, वी आर डन विद सम. अपडेट खुद से कर लोगे पक्का? कर लेंगे. अभी तुम्हारा तो दिख नहीं रहा है. ऑलराइट, अपडेट